Okay, hello dear students. So there was an interruption in the previous video, so I'm going to continue the lecture. So far we have covered, we're talking about dates. So uh, so the topic is pitfalls to avoid in technical writing or in writing. So when we mention the date, we need to know our audience because the format of writing a date varies from country to country. For example, in UK, uh, day comes before month, and then after that they mention year. All right. So when you are communicating with your client, and that client is basically based in United Kingdom, all right. So you need to very careful when you are writing the date. All right. And in USA they usually follow this format of writing a date. So in USA they follow, they write month before, and then the date, the day, and then the year. All right. So if you write like this 5/3/2020, so it means so a person living in UK will understand it in different way as compared to a person who is living in USA. All right. So that date, uh, apparently it seems that it is, five is the day, three is the month, March, and 2020 is a year. But a person living in USA will interpret it in this in different way, and a person living in UK, he will understand or interpret this date in a different way. तो अगर आपने किसी क्लाइंट को फॉर एग्जांपल डेडलाइन दी है लाइक दिस, ऑलराइट, so he will understand or he will interpret the deadline in different way. all right. So अगर यूके है तो यूके वाला बंदा समझेगा कि ये मार्च की मार्च की जो है फिफ्थ, दैट इज द डेडलाइन. बट इफ दैट पर्सन लिविंग इन यूएसए एंड इज फॉलोइंग दैट फॉर्मेट, तो वो कहेगा कि ये जो है वो मई की थर्ड जो है वो डेडलाइन है. ठीक है. तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया है. सो व्हेन यू आर mentioning a dated action, or when you're mentioning the date, you need to be very careful and you need to understand who is my client, where does he live, and what kind of date format he follows. So you should write date in accordance with the nationality of that person. All right. Or the format he is following or she is following. Same is the case with PM or AM. So when you mention the time, you need to write whether you're talking about PM or AM. For example, you write an email, and in that email you mention that the meeting will be held at 2 o'clock. All right. So 2 o'clock mean what? 2 o'clock. All right. So what uh, exactly 2 o'clock means? All right. So आपको यहाँ mention करना है कि that you're talking about 2 a.m. or 2 p.m. And bear that in mind that 2 p.m. doesn't same in every country. For example, here in Pakistan, let's say it is 2 p.m. or a.m. All right. But in India it would be different. In America that would be different. All right. So the same time, uh, 2 p.m. doesn't mean 2 p.m. in USA. 2 p.m. doesn't mean 2 p.m. at China. All right. So time keeps uh, changes. All right. So time keeps changing with the respect of the country or the time zone. All right. Time zone के एतबार से time बदलता रहता है. तो आपको ये भी ख्याल करना है कि when you are communicating with your international clients, तो आपने उनको कौन सा टाइम बता रहे हैं. पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम बता रहे हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम बता रहे हैं आप. ठीक है. कौन सा जीएमटी बता रहे हैं. ठीक है. दे डिफरेंट टाइम जोन्स. तो आपको ये भी देखना होता है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप टाइम क्या लगा रहे हैं, किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. And one of the solution to this problem is
that you can mention and you can mention the time in their time zone. For example, आपने एक मीटिंग रखनी है, you are going to convene a meeting and the timing of that meeting will be 2 p.m. in Pakistan, और अमेरिका के अंदर लेट्स से वहाँ पे रात के 8 बजे होंगे, 8 p.m. है, so you can mention 8 p.m. according to USA time, USA standard time, alright, ताकि उनको पता चल जाए कि ये जो 8 p.m. है मेरे मुताबिक है, ठीक है, ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो. So when you say today, yesterday, tomorrow, so that is very ambiguous adverbs. You shouldn't use them in your communication, in your technical communication. For example, आप कहते हैं जी today there will be a meeting. आज एक meeting होगी. तो today से क्या मुराद है? हो सकता है आपका today है और अगले बंदे का जो है वो tomorrow है. ठीक है, यानी आपका भी ये वक्त चल रहा है. ठीक है, अभी आपका लेट से अभी ये जो है वो मॉर्निंग चल रही, हो सकता है अगले बंदे की जो है ना वो नेक्स्ट चला गया हो, दिन चला गया हो, टाइम जोन ही चेंज हो गया हो, वो पीएम से एम में चला गया हो, उसका टुडे जो है वो यस्टरडे बन चुका हो. सो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. ठीक है, तो ये भी एक पिटफॉल है, आपको इससे अवॉइड करना है. ठीक है, क्योंकि हम एक डिफरेंट टाइम जोन्स में रहते हैं, उस हिसाब से हमारा सिस्टम बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, if you look at this date 5312, so it varies from country to country. All right, so 5312 से मुराद यूके जो होगा उसमें उसके मुताबिक मई की 3 तारीख होगी. In United Kingdom it will be 5th of the March. In France it will be 5 March. Germany 5 March. Sweden, स्वीडन क्या करेगा, ईयर पहले लिखेगा. ठीक है, उसके बाद जो डे होगा वो बाद में, उसके बाद जो है मंथ लिखेगा. तो स्वीडन इज totally different from the rest of the countries, so they follow different format. So if you are communicating with your Swedish friends or Swedish clients, so you need to be very careful when you write a date. All right, इसका सिंपल ये भी हो सकता है that you mention a month. For example, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मई 2012, ताकि उसको मंथ पहले बता दिया जाए. ठीक है, कंफ्यूजन ना हो. इटली 5312, so they write the date in this way. So if your client is an Italian person, so you need to be very careful in writing the date or mentioning the time. Same is the case with time, 12 p.m., am. Some countries use this format, 17, 15, 17, 15, 17 hours, 15. In Quebec, Canada, so they use this format. Again, it depends on your audience, it depends on your client whom you're working with, all right? So according to your client, you will modify your writing or your writing style. Okay, there's another pitfall we need to avoid, and that is using biased language. All right, biased language. For example, that language that uh, you can say give negative image of someone or give negative impression. We need to avoid those expressions in our writing. For example, elder, old folks. ये जो elder है, old folks है, 70 retirees. ऑलराइट, इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उनको इस्तेमाल करने से अवॉइड करना. प्रोफेसर जॉन्स एन एल्डरली टीचर, an elderly teacher at State University is publishing a textbook despite his age. Now, an elderly teacher, elderly, so it gives a negative connotation. So we will not use this expression. So we will use Professor Jones, a State University professor, is publishing a textbook. That's it. तो हमें एल्डरली क्या है कि उसकी जो पिक्चर है, अब इसका मतलब कि प्रोफेसर जॉन है, बूढ़ा आदमी है और वो एक किताब पब्लिश कर रहा है. सो एन एल्डरली गिव यू अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ प्रोफेसर जॉन्स. सो हमें इसको अवॉइड करना है. ठीक है, अपनी राइटिंग के अंदर हमें इस तरह के जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, जो बाइस लैंग्वेज है, उसको अवॉइड करना है. जॉन सफर्स फ्रॉम डायबिटीज. ठीक है, तो अब देखिए सफर्स फ्रॉम, अब उसको सिंपल के इज डायबिटिक. ठीक है, आप उसको ये कहीं ना कि सफर्स फ्रॉम, आप एक कंसाइज लैंग्वेज में लिखें कि जॉन इज डायबिटिक, शीला इज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, शी यूजेस अ व्हील चेयर, दैट्स इट.
शीला यूजेस अ व्हील चेयर। तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, कम अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखें कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो लुक एट देम। ओके, बाइस्ड लैंग्वेज और अनबाइस्ड लैंग्वेज के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो है सेक्सिस्ट लैंग्वेज का, ठीक है। द लैंग्वेज दैट वी यूज इन ऑर्डर टू डोनेट अ मेल और फीमेल, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल जब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं और इंटरनेशनली अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, आजकल ये जो जेंडर है, ठीक है, ये कंफ्यूज हो चुकी है इंटरनेशनल सोसाइटी में, ठीक है। Sometimes you look at the person and that person looks like a man, but he uh, doesn't call him a man, ठीक है, he prefers to be a female, all right। तो इस तरह की चीजें होती हैं इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर। So that's why we don't use she or he or a woman, man, male, हम उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस सारी कंफ्यूजन से से बचने के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम मिस्टर या मिसेस इस तरह की चीजें लगाने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सीईओ The CEO of Yahoo is a woman named Carl A. Bars। अब ना a woman, अब हमने ये बाइस्ड है, ठीक है। तो हमने पिन पॉइंट कर दिया कि ये तो एक औरत है। तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे प्रोफेशनली तो हम इसको यहाँ पे विमेन को जो है वो रिमूव कर देंगे। द CEO of Yahoo is a Carl A. Bars, that's it, Carol A. Bars, whatever the pronunciation is, ठीक है। तो हम women को खत्म कर देंगे। When setting up his experiment, the researcher must always check for errors। अब his हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी रिसर्चर तो सिर्फ आदमी ही होते हैं, मेल ही रिसर्च करते हैं, फीमेल तो रिसर्च करती नहीं है। सो दैट्स द बायस्ड लैंग्वेज। तो हम इसको हिज को खत्म कर देंगे। व्हेन सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स द रिसर्चर, अब नाउ रिसर्चर कैन बी मेल और फीमेल, लेकिन जब जहां पे हमने पहले सेंटेंस में व्हेन वी यूज हिज, this pronoun clearly indicates that we are talking about a male person, and we are giving negative connotation about female, that female are good researcher, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। The researcher must always check for errors। As we acquired scientific knowledge, men began to, men, so this is biased word, men began to examine long held ideas more critically। तो यहाँ पे men को हम क्या करेंगे, people के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ पीपल जो है वो एक एक जर्नल एक टर्म है, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर जो है मेन भी, मेल भी आ जाएंगे, फीमेल भी आ जाएंगे, मेन भी आ जाएंगे, वुमेन भी आ जाएंगे, ठीक है। सो जब आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप जो बाइस लैंग्वेज, सेक्सिस्ट लैंग्वेज से अपने आप को बचाएंगे। All right, next is, so what is the conclusion? You need to avoid writing he, she, her, him, etc. So you can use instead they or their। That is very important concept। आप जनरली जो है वो दे और देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो दे भी, अब दे के अंदर भी ही भी आ गया, ठीक है, हर भी आ गया, और देयर के अंदर भी जो है वो ये ऐसा जनरल प्रोनाउन है, ठीक है, दैट वी कैन रिफर मेल एंड फीमेल एज वेल। तो हम इन उनकी जगह पे ही शीट वगैरह की जगह पे हम दे और देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देयर सम जेंडर टैग्ड नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं that are very they are gender specific, they indicate gender, your gender, तो हमें उसको भी avoid करना। For example, when we are writing, we should avoid writing mankind। mankind is, it seems like कि mankind में सिर्फ man ही है। हम we can use people, manpower, workers, personnel। हम manpower की जगह पे ये इस्तेमाल कर, the common man, the average citizen, ठीक है, कॉमन पर्सन। वाइज मैन, अब वाइज मैन से मुराद है कि जस्ट वाइज जो है वो यही होते हैं, मैन नहीं होते हैं, वाइज वुमन नहीं होती, तो हम उसको लीडर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लीडर्स में के अंदर मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया। बिजनेस मैन, बिजनेस पीपल, अब जस्ट बिजनेस पीपल कह दें तो दोनों कैटेगरीज। पुलिस मैन, पुलिस ऑफिसर्स, फायरमैन, फायर फाइटर्स, फोरमैन, सुपरवाइजर, चेयरमैन, चेयरपर्सन, सिंपली चेयर, ठीक है। इससे पता नहीं चलेगा कि हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। स्टीवर्ड,
आप फ्लाइट अटेंडेंट कह लें, ठीक है, वेट्रेस आप सर्वर कह लें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जेंडर स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं, जो अल्फाज होते हैं, ठीक है, दोज वर्ड दैट हाईलाइट जेंडर ऑफ समवन और प्रमोटिंग वन जेंडर, ठीक है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं और हम उसको एक जनरल कैटेगरी का लफ्ज लेके आते हैं. So these are some of the pitfalls we need to avoid when we communicate uh, technically or in a professional situation. All right, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए. Thank you so much जी. Thank you so much for listening. If you have any question, you can ask me, or you can ask me in the group as well. So I'll try to answer your questions. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.